श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। सिंदूरवदना पंकजरमणा सिंदूरवदना पंकजरमणा सिंदूरवदना पंकजरमणा मंगलमूर्ति मोरया। श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता मंगलमूर्ति मोरया। श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। जय गुरु ओंकारा गुरु गुरु जय गुरु ओंकारा गुरु गुरु जय गुरु ओंकारा गुरु 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 नारायण नारायण गुरु गुरु नारायण नारायण
Guru, Guru. आनंदमूर्ति जय गुरु आनंदमूर्ति जय गुरु गुरु नारायण नारायण हो गुरु नारायण नारायण हो ब्रह्मा शिव हरि नारायण हो ब्रह्मा शिव हरि नारायण हो नारायण ओम गुरु नारायण ओम नारायण ओम गुरु नारायण जय 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 गुरु जय 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 गुरु गुरु नारायण नारायण हो गुरु गुरु नारायण नारायण हो गुरु जय गुरु ओंकारा गुरु गुरु जय गुरु गुरु आनंद मूर्ति जय गुरु आनंद मूर्ति जय गुरु गुरु नारायण नारायण हो गुरु गुरु नारायण नारायण हो जय गुरु ओंकारा गुरु गुरु गुरुदेव गुरु नमः शिवाय गुरुदेव गुरु नमः शिवाय नमः
Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shiva. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shiva. Gurudev Guru, Namah Shivaya. Gurudev Guru, Namah Shivaya. Gurudev Guru, Namah Shivaya. Gurudev Guru, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Shiva. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shiva. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shiva. Guru Om Jaya Jaya Sadguru. Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Gurudeva Guru Om Namah Shivaya. Gurudeva Guru Om Namah Shivaya. Oh Gurudeva Guru Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shiva. 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 Shiva Om Jaya Jaya Sat Shiva. Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Ho Shiva Om Jaya Jaya Sada Shiva. Shiva Om Jaya Jaya Sada Shiva. Ho Guru Om Jaya Jaya Sada Gurudeva. Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Gurudeva Guru Om Namah Shivaya. Gurudeva Guru Om Namah Shivaya. Oh Gurudeva Guru Om Namah Shivaya. Gurudeva Guru Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Shiva. 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 Oh Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Oh Shiva Om Jaya Jaya Sada Shiva. Shiva Om Jaya Jaya Sada Shiva. Oh Guru Om Jaya Jaya Gurudeva. Gurudeva Guru Namah Shivaya.
जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ जय जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ जय दुर्गे माँ श्री भुवनेश्वरी माँ देवी भवानी माँ काली कपालिनी 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 जगदोधारिणी माँ जगदोधारिणी जगदोधारिणी माँ अम्बानंद रूपिणी माँ अम्बानंद रूपिणी माँ
परमेश्वरा देव गंगाधरा परमेश्वरा देव गंगाधर परमेश्वरा देव गंगाधरा परमेश्वरा देव गंगाधर जगदीश्वरा गौरी प्रिया जगदीश्वरा गौरी प्रिया जगदीश्वरा गौरी प्रिया जगदीश्वरा गौरी प्रिया त्रिनयन नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव नयननर्तन सुन्दर नटवर शङ्कर शिव त्रिनयन नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव रजत गिरिनाथा सर्वेश्वरा शंकरा रजतगिरिनाथा हो सर्वेश्वरा शङ्करा रजत गिरिनाथा ओ ओ परमेश्वरा देव गंगाधरा परमेश्वरा देव गङ्गाधरा परमेश्वरा देव गंगाधरा परमेश्वरा देव गङ्गाधरा जगदीश्वरा पाहि गौरी प्रिया जगदीश्वरा पाहि गौरी प्रिया जगदीश्वरा पाहि गौरी प्रिया जगदीश्वरा पाहि गौरी प्रिया त्रिनयन नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव नयननन्दन सुन्दर नटवर शङ्कर शिव त्रिनयन नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव नयननन्दन सुन्दर नटवर शङ्कर शिव रजत गिरिनाथा ओ सर्वेश्वरा शंकरा रजतगिरिनाथा हो सर्वेश्वरा शङ्करा रजत गिरिनाथा ओ
परमेश्वरा देव गंगाधरा परमेश्वरा देवा गंगाधरा जगदीश्वरा पाहि गौरी प्रिया जगदीश्वरा पाहि गौरी प्रिया त्रिनयन नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव त्रिनयन नर्तन सुंदर नटवर शंकर शिव रजत गिरिनाथा ओ सर्वेश्वरा शंकरा रजत गिरिनाथा ओ सर्वेश्वरा शंकरा रजत गिरिनाथा ओ शिव 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 ओ शिव 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 ओ शिव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओ शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओ शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय डम 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 रूपजे 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 घन 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 घंटा बजे घन 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 हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा ओ नटराजा ओ हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा ओ हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा शिव 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 ओ शिव 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 ओ शिव 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 ओ शिव 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 शिव
Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Dama 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 damaru baje, dama 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 damaru baje. Gana 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 घंटा बजे, गण 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 घंटा बजे. हे नटराजा, हे नटराजा, हे नटराजा. ओ नटराजा, हे नटराजा, हे नटराजा. ओ नटराजा. नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय. ओ नमः शिवाय. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om. गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ. ओ राधे ओ राधे ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे ओ राधे, ओ राधे ओ राधे. गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ. गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ. गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ गोविंद हरिओ गोपाल हरिओ.
गोपाल हरि ओम गोपाल हरि ओ हरि ओम हरि ओम ओ राधे can you all clap together and sing together ओ राधे ओ राधे गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम 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 गोपाल हरि ओम ओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओ राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम गोपाल हरि ओम ओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम मोर मुकुट धर कृष्ण मुरारी 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 हो राधा रमण मूरत मनहारी राधा रमण मूरत मनहारी हो राधा रमण मूरत मनहारी राधा रमण मूरत मनहारी हरि हरि बोले बोले ये रोम रोम गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम 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 गोपाल हरि ओम गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम गोपाल हरि ओ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओ राधे ओ राधे ओ राधे गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम गोविंद हरि ओम गोपाल हरि ओम How are you all?
कैसे हो सब? मस्त हो? वेरी गुड. हाँ. Yeah. Jai Gurudev Guruji. Uh-huh. Two government programs which are happening simultaneously. One of the Indian Coast Guard senior officers and the other one of Ministry of Forests and Environment along with the climate change. And there are questions from Yeah. these two batches. Why and how has stress survived so long despite increase in the number of people with positive vibes under the art of living tutelage? You should ask it other way. You know, it's a wonder how so many people survived with the stress. It's because of they do pranayama, meditation, yoga, all this. It brings the resilience. It helps people to manage their mind. You know, stress is the product of too much to do, too little time and no energy. That's the formula for stress. When you see life from a bigger perspective and you have more energy, when you do pranayama and meditation, then you are able to manage the stress much better. Isn't it? Yeah. But you have to do more. If you are doing pranayama, still you are stressed. Just imagine if you are not doing it and then if you are stressed, how worse it would have been. You are moving around with an umbrella, still you got wet. Imagine you are moving without an umbrella in a rainy season, you will be dripping, you will be drenched so much. Isn't it? Yeah. Continuation of that, needing your blessings, Guruji, in Indian Coast Guard as well as the armed forces overall for taking this forward with the collaboration of Art of Living. Absolutely, absolutely. We are all ready. I addressed the southern unit of army, the southern command in Pune wanted me to come and address. So I addressed the family, spouse, and the young budding army men in Pune. It was aired, I think, all over the southern, even north also. It was webcast. They were on the screen from many 32 places or so. We are there. Just be assured we are there because you are guarding the coast. It is our duty to guard your health and your well-being. Yeah. Our teachers, Art of Living teachers, are at your disposal. When do you see salvation for our country in terms of health, education, and material well-being, like some of the other developed nations and countries which are there in the world? Listen, India has already risen to the 5th position. World over, everywhere, there are issues. Don't think it is it's uniform or poverty or uniform wealth. Everywhere there is mix. In a developed country like United States, if you go to Los Angeles, there are nearly 80,000 homeless people. 80,000 in Los Angeles. You just don't hear about it in the newspapers. And so, there is poverty in many places. In England, now recently, several millions didn't have food, or they had only survived with only one meal a day. So, when you see this country, whether it is progressing, I would say yes. Economically, it's progressing.
It is quite vibrant and there is so much startup ideas. Just this last week, we had many startup ideas in our university, in SSU. I was there and could see the brilliance in young people to come up with startup ideas. So, outer progress is inevitable. It's imminent. When there is peace, there will be progress. If there is conflicts, if there are people are fighting, then it takes a beating in advancement. Yeah. That's why peace is so much essential for any type of progress. Here it's a peaceful society, so things are getting better. But see what's happening in the neighboring country, Pakistan. It's a bomb blast inside a mosque, so many people were killed, 100 people. There are no foreign results, it's really going from bad to worse. See, Nepal, Sri Lanka is suffering, all these countries. When you see in the South Asia, at least you see in India, there is a hope. It's doing well. And we are able to help the countries like Sri Lanka and Bangladesh. India is helping them in a big way. So, yeah, because we have the spiritual wealth, we have to properly streamline that. I was in Pune and we started a campaign for all the colleges, drug-free India campaign. And 1.5 lakh people attended. There was no place for all young people, students. And there's so much energy, enthusiasm in them. So all that we need is this spirit to move forward, march ahead. Once you have that, you can get over any obstacles, and some of the ministers who said that we have never seen a crowd that to so many young people for a spiritual program. So we have the best of East and West, science and technology and the human values. So we need to put them together. Yeah, go ahead. How can one remain always motivated in the armed forces and lead a stressless and happy life? You have asked the right question. The answer is you are already doing what you are doing here. These 3 days, 4 days, or these 5 days, right? You have a 5-day program. At the end of the 5 days, you will see that you got the answer. Yes? How to understand our children and the young adults that we have in the family, especially when we are staying away from them sometimes, and while we are there with them, they are seemingly immersed in their world, which is virtual world. Yes. You are so lucky. You are living in an age of technology where you can converse with them from your cell phone. You can see them. You can make video, audio call. You can download our Elements app. Elements, Art of Living has an app called Elements app. It is free for all. And it's free and it has this video, audio and messaging service. And video calls are better than WhatsApp calls. And the data is secure. All the data will be here. So nobody can tap or misuse your. It's secure app for you. It's very secure. Data security is there.
Nobody can tap and listen to what you are speaking to someone. That's not there. So it's safe, and you should download it if you are not downloaded. And tell your family also, and wherever you are, you can see them, talk to them. Just imagine 20 years back, what was the situation. They had to go to a phone booth and make a call, book a call and sit there waiting. And you get the phone and then you say, hello, 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 hello. सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, वो बोले नहीं सुनाई दे रहा है. And you write a letter, चिट्ठी भेजो. Just remember how many, it may take weeks to reach the letters. But you are in such a age, the communication has improved so much, isn't it? Yeah. Social media is good, it has good things, and if you do it too much, it's not good. Nothing should be done, taken to an extreme. Too much of anything is not good, isn't it? Ati sarvatra varjiyet. What we have said. Don't do anything too much. Yeah. We are a set of officers in the little Andamans and smaller islands. And what is it, Gurudev, that we can do between the armed forces, the Indian Coast Guard specifically, and Art of Living to improve the lives of people in these little islands? You suggest us, we will do. We can do skill development trainings for youth there. We can create entrepreneurship in the youth. We can teach them organic farming. We are going to have a meeting here also soon, a farmers meeting. Training for farmers, how to cultivate zero budget, agriculture. And preservation of nature, we can work for that. For environmental causes, we can work, plant trees. There's so many projects Art of Living our volunteers are doing. Our IAHV, our other wing, International Association for Human World, they are doing a lot of work. Vyakti Vikas Kendra is doing so. You can just talk to the directors here and see what you want there, how you would like to go ahead. Yeah. Done? Gurudev, a few questions. मुख्य बात यह है कि आप सब प्रसन्न रहो. देखो, काम का कोई अंत नहीं है. कुछ काम करो तो उसमें कुछ ठीक होता है, कुछ नहीं ठीक होता है. किसी भी काम करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ दोष कहीं ना कहीं रह जाता है, कमी रह जाती है. हम उसी को लेके दिमाग खराब करते रहेंगे, क्या फायदा है ना. तुम प्रसन्न रहो. The vibrant positive energy you have, that makes a difference to you and to everybody else. Yeah. A few questions from your social media handles, Gurudev. Gurudev, I heard you mentioning that memory is stuck in cells, which is the reason disease remains in the body. How can we clean up our memory? Meditation and pranayama. Kriya is the best thing to release all those deep-rooted cell memory. Yeah. Gurudev, I have not had the chance to speak to you personally. How can I know that you have heard me? Please guide. Your job is getting done, no? How many of you see your jobs are getting done? Look at that. Whatever you wish, it is happening, right? Happening? How many of you it is happening? You are getting all the boons, you are getting all miracles happening in your life? Yeah. See. The Puranas describe a hierarchy for the deities. Does this mean that there is superiority in certain vibrations? There is nothing called superior and inferior.
It is just what is more powerful, what is less powerful. Some mantra vibrations are more powerful than others. But you can't have the very powerful thing for everything. See, look at the light on the trees. It has its own beauty. They're small, they're powerful, less power, but it has its work. Right? See, even in your bathrooms, you have two types. One light is in the mirror, the other light is on the ceiling, right? Now, if you ask me which is most important, the light in the mirror or light in the ceiling, what do I say? They all have different uses, man. Come on. Everything has got its own use. So, in India, usually when they say the caste system says, oh, the Shudras have come from the feet, the Brahmins have come from the head. And this is described as, in a society, the head is Brahmin, the Kshatriyas or the warriors are their arms, and Vaishyas or the business community is their legs, is their, leg, and the working force, the Shudras, are the feet. Now, which is higher, head or feet? What is good? Which is the real good part in a body? Come on, every part is good. Feet is worship, not the head. If you see people bow down to the feet, the puja is done to the feet. Pad puja bolte hain. Wash the feet and worship the feet only. Nobody worship the head. That means what? People who are moving the society, they are worth worshipping. The labor force has to be honored. In this country, from centuries, the Shudras were given a lot of respect and they were honored. In fact, if you see all the rishis, many of them, most of them have come from that family, that caste. That's why in the field of spirituality there is no caste. All castes merge, become one. One human existence. That is love. So, your nature of your consciousness is love. Nature of consciousness is what? Priti. Asti, bhati, priti. The world has name and form, nama and rupa. But the consciousness, the life has, it is conscious and it is love. That is it. And that is God. God is love. Yeah. So Devatas are like the rainbow colors of the white light. Paramatma is God, which is one light. But in that light, when it passes through a prism, it divides into 7 colors. Vibka, blue, white, yellow, green and all orange. So these are different devas. Shiva, Vishnu, or Devi, Ganpati. All these are a particular quality of one big light. That is Paramatma. That's why when you say Ganpati, you say Ganpati, you are sun, you are moon, you are God, you are everything. And what is the form of Ganpati? Nirakara, formless. You are formless effulgence, light. But I would like to enjoy worshipping you in a certain form. That is what they have said, the ancient people. So all devatas are like different colors of rainbow. Now if you ask me which is higher, which is lower, what do I say? Is red higher, orange superior?
blue or green lower than that? No. Do you understand what I'm saying? So, all the Deva Devatas are different qualities of the one divinity. Yeah? And you enliven those qualities. Now many people, why there is so many gods? See, when God created this planet with so many varieties, so many food items, you have so many food, right? So many type of potatoes. You know, in Peru and in Colombia, they say they have 3,000 types of potatoes. Blue potato, purple potato, red potato, small one, big one. How many vegetables are there? How many type of birds are there? How many type of snakes are there? There is a book in the about the ashram, about the fauna flora of the ashram. If you are interested in biodiversity, just pick that up. You can see how many types of snakes are there here. How many types of butterflies are there? How many types of birds are here? So God loves diversity. So why do you want to put him in one dress, military dress? The God can also be in many forms, isn't it? Why should he be restraining? One who loves diversity will also be very diverse. So he appears in many forms, many names. This is the most intelligent thing to think about. What do you say? Isn't it? Many different forms. But it is all. See, you don't go with one type of dress all the time, isn't it? You change your costumes so many times. Do you wear the same color every day? No, you keep changing. When you like diversity, and God loves diversity. Otherwise, he could have just made only one type of potato and eat this all your life. You would be so bored to death. Just imagine only beans, nothing else in your dishes, and every day you have to eat only beans. So these people who think God is only one, not too many, is mistaken. They don't know God. God loves to appear in all the forms. Because there is nothing outside God. In fact, God should not be thought of somebody sitting out there. It is the field of energy in which we are all. You are that. Thou art that. And to realize this, you listen to knowledge, meditate more. Yeah? Sitting and meditating. हिंदी में कितने लोगों को चाहिए इधर? थोड़े से लोग हाथ उठा रहे. How many want in English? Okay. See, your body has a face. Does your mind has a face? No. You don't have a face. Your body has a face. Close your eyes for just 15 seconds. Do I have a face? You don't. Open your eyes and similarly think nobody has a face. Only their bodies have face. You get password to another dimension. Yeah, okay. गुरुदेव, क्या शिवरात्रि की रात को सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? शिवरात्रि की रात जागरण करने के पीछे का रहस्य क्या है? देखो, हम अपने स्वामी है ये बताने के लिए हम नींद को लांद सकते हैं,
बिना नींद के भी रह सकते हैं, अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए इस तरह से जागरण वगैरह करते हैं। शिवरात्रि के दिन सोने से पाप लग जाएगा, किसने बताया? गलत है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान विष्णु तो सोते रहते हैं अपने आराम से। अरे भाई रोज तो सोते हो, जागो। भीतर से जागने के लिए तो शिवरात्रि बोला गया। हम क्या करते हैं, बैठ के मूवी देखते रहते हैं, अरे जागरण करना है, और इस चित्त में पता नहीं कितने क्या क्या चीज़ें, हम कितने कचरा चित्त में भरने लगते हैं और समझते हैं जागरण करते हैं। नहीं, तुम ऐसे प्रेम में इतना एक्साइटेड हो जाओगे और प्रेम में भजन करते रहोगे तो नींद उड़ ही जाते अपने आप। जब किसी के प्रेम में पड़ते हो और बैठ के बातें करते रहते हो, रात तो नींद तो आती नहीं ना। आती है क्या? जिस शहर में भी हम जाते हैं, एक दिन पहले एक दिन बाद लोग बैठ के वही बातें करते रहते, बोलते सोए ही नहीं। आज पूछो बेलगाम के लोगों को, कल पूछना सोए क्या, बोलेंगे नहीं रात पर बात करते रहे, इतना अच्छा हुआ। बड़े जहाँ मन लगता, जहाँ प्रेम उभरता है, अपने प्रिय को देखा, घर में कोई आए आपके बहुत नज़दीक के व्यक्ति, बहुत दूर से आए, कोई आपके बहुत निकट के व्यक्ति दूर से आते हैं, उस दिन सोते ही नहीं। आप तो सोते हो क्या? ऐसा उत्साह बना रहता है। जब चेतना इतना विकसित होता है तो नींद अपने आप गायब हो जाती है। ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाते तो नींद ही नहीं आती। तो ऐसे शिवरात्रि के दिन इतना शिव के प्रेम में पड़ गए, उनको इतना उनको धन्यभागी महसूस किया उनके प्रति, या वो भक्ति का रस इतना उमड़ा तो नींद भाग गई। और कहानी सुनते गए तो जब भक्त मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं तो बातें करते हैं अपने प्रिय के बारे में, तो उसी में टाइम पूरा बीत जाता है। गुरुदेव, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है तो ये हमारा कर्म है, ये सोच के शांत बैठना है कि कुछ एक्शन लेना है? शांत होके एक्शन लेना है। गुरुदेव, मोक्ष मिलने के बाद आगे क्या होगा? अरे पहले मोक्ष तो प्राप्त करो, आगे की बात फिर बाद में बताएंगे। हम तो हैं तुम्हारे साथ। हम गुरुदेव, अहंकार क्या है और इस पर विजय कैसे पाएं? जब अहंकार का पता ही नहीं चला, फिर विजय पाने की चक्कर क्यों पड़ रहे हो भाई? अहंकार तुमको परेशान कर रहा हो तभी ना विजय की बात करनी है। अरे कोई सताने वाला ही नहीं तुमको, तो तुम उनको दंड कैसे दोगे यार? जरा समझो तो। तुम अहंकार जिसको बोलते हो, जिससे तुम परेशान हो जाते हो, अंदर घुटन से होने लगती है, तो उससे बाहर कैसे? ज्ञान से, गान से, ध्यान से। ठीक है। एक आखिरी प्रश्न गुरुदेव, अगर वैराग्य महत्वपूर्ण है तो उसके साथ साथ परिवार के प्रति प्रेम और रिश्ते भी कैसे बनाए रखें? वो तो बना रहेगा, अनुराग रहेगा सबके प्रति। वैराग्य के साथ ये मत सोचो वैराग्य माने शुष्क हो गया, नीरस हो गया, उदास हो गया। नहीं, वैराग्य प्रेम के विरोध में नहीं है वैराग्य। हाँ, आसक्ति के विरोध में, अटैचमेंट के विरोध में, प्रेम के नहीं। ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ದಿನದಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವೇನು? ನೋಡಿಪ್ಪ, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಮಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನ, ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೇ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತೀನಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಿನಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕೇನು ಅಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡೇಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಹೀನವಾದದ್ದು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಮುಕ್ತವಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೌಚ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜನಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀನು ನಾನು ಅಂತ ಗುದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಗರಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಂಥ ಕಡೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ದಿನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ತಲೆ ಹೆಚ್ಕೋಬೇಕು? ನಾವು ದಿನವೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ದಿನವೂ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿರಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸೋದು, ಆಚರಣೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಚರಣೆ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ದಡ್ಡತನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ. One question in Tamil, Gurudev. என்னுடைய கருத்துக்களை மற்றவங்கள் சுலபமாக ஏற்றுக்கணும்னா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் குருதேவ்? ஒன்று கருத்தில் நீ கருத்து மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும். நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோமோ அதுதான் மற்றவங்க மேலே ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணும். நம்ம சொல்கிறது ஒன்று பண்ணுறது ஒன்றா இருந்தாக்கா அதை நம்ம என்ன கருத்துக்கள் சொல்கிறோமோ அது ஜனங்க கேட்டாலும் அவளுக்கு அது பிடிப்பிட்டு வராது. செயல்லையும் சொல்லையும் செயல்லையும் ஒரே விதமாக இருந்தோம்னா, ஒன்றாக இருந்ததுன்னா, நம்ம சொல்லும் செயலும் ஒன்றாக இருந்ததுன்னா அது நம்ம சொல்கிறதும் மற்றவங்களுக்கு நல்ல அது என்ன சொல்லுவோம், இம்பேக்டுக்கு என்ன சொல்லுவோம், புணப்பு உண்டாகும். அது புணப்படும், அது மற்றவங்களுக்கு மேலே புணப்படும். சரியா? ஓகே. All the birthdays and anniversaries, just stand up only at the birthdays and anniversaries, and everyone around them greet them. Greet them, yeah. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ. हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ.
केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। ओ वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। ओ गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। ओ गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। ओ हरि सुंदर We need नंद support to shift मुकुंद all barricades and plastic chairs. ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैषवे नमः। The quintessence of life is Shiva, and that is deep in every heart. Shivratri is the day that we remember seed of creation, essence of creation. It is embedded in us. So we go in deep meditation and rejoice in the Shiva principle, Shiva Tattva, Shiva energy. कांत शंभो शशांकार्धमूले